Good morning, students. Yesterday, I had given you some exercises related to passive voice in the present indefinite tense. Yesterday, I had taught you how you convert active to passive in present indefinite tense. Here, some exercises are given. For example, they believe me. Now here object is changed into subject, me is changed into I. I के साथ क्या लगता है am. With I we'll take am as a helping verb. I am believed by them. Next, she does not like you. क्या हो जाएगा? You are not liked by her. Hari teaches Mohan daily. Mohan is taught by Hari. Who makes a noise? By whom is a noise made? Why do you beat your servant? Why is your servant beaten by you? Now I start next tense in reference to passive voice, present continuous tense. What is present continuous tense? In present continuous tense, the general structure is subject plus is am plus first form of the verb with ing plus object. यही जनरल स्ट्रक्चर होता है ना. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ing, देन ऑब्जेक्ट. दिस इज एक्टिव फॉर्म. ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है. जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, ही इज राइटिंग ए लेटर. Now we have to convert it into the passive voice. अब हमें इनको passive voice में convert करना है. Now the passive voice structure is object is changed into subject. Then we use here is, am, are. Then being, being, being. Then third form of the verb by. In last subject is changed into object. Here we see the structure of the present indefinite tense and present continuous tense are same, but present indefinite tense and present continuous tense are same. Only there is a change of being. In present indefinite tense, being is not present in passive voice structure, but in present continuous tense being is present in passive voice structure. Now what is the passive voice of his writing a letter? Object is changed into subject. A letter is here, object. This is changed into subject, and according to a letter is, we use here is as helping verb. A letter is, then we use being. Then third form of the verb. What is the third form of the verb? Written. A letter is being written by. He is converted into him. A letter is being written by him. Then when we use it into the interrogative sense. Interrogative. Now what is the interrogative of he is writing a letter? Is he writing a letter? This is interrogative in active form. And what is then the passive form is? Then the structure is, am, are. आप जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आपके हेल्पिंग वर्ब रहता है. इज, एम, आर. देन वी यूज हियर ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट. देन वी यूज हियर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब by. Then subject is changed into object. Here is a letter being written by. Is a letter being written by him. ये हो जाएगा ना. Is a letter being written by. is एम आर रहेगा. फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में. ए लेटर, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, एंड सब्जेक्ट टू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. देन व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? जब हम नेगेटिव बनाएंगे कुछ नहीं करेंगे, नॉट लगा देंगे. ही इज, नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही इज राइटिंग ए लेटर का. ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर.
जब हम इसका वो करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, then we use here not, then we use here being, then we use here by, a third form of the verb by, then subject is changed into object. तो क्या हो जाएगा यहाँ, he is not writing a letter, तो क्या हो जाएगा, a letter is not being written by him. A letter is not being written by him. ये पैसिव वॉइस आपका हो गया. नाउ वी यूज हियर, अगर हम ये देखें कि आपको मैंने पहले ही बताया था जब WH होता है तो क्या होता है, WH हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, WH आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर आपका हो जाएगा बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई, सॉरी इज एम आर, फिर आपका हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया है, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई, फिर सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ इसका. Why is he helping you? अगर इस तरह का सेंटेंस है, वाई इज हैप्पी, ये एक्टिव फॉर्म में है. जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो WH इंट्रोगेटिव वर्ड तो ऐसे ही रहेगा. फिर आपके इसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो यू है ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा. तो यू अगर यहाँ लिख दें, यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, आर, तो वाई आर यू, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है तो ये सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा यहाँ. वाई आर यू बीइंग helped by, then subject is changed into object. Why are you being helped by him? इस तरह से आप WH का बनाएगा. whom का कल मैंने बनाया था. Now your present continuous tense is completed.